8th स्टैंडर्ड में एक मैथ एग्जाम जस्ट हुआ था. टीचर ने मुझे बुलाया पेपर चेक करके और मैंने पेपर अपना हाथ में लिया. ऐसा लग रहा था किसी ने पेपर पे रेड पेन से x and 0 खेल रखा है. He says कि तुम्हारे बाप को भी लगता होगा कि तुम बैड डेट्स हो. यार सीए में फिर से मैथ्स आ गई कैसे. तो बोला अभी इससे ज्यादा दिन भाग नहीं सकते मैथ्स से, कुछ तो इसमें करना पड़ेगा. एंड याद है मुझे यार वो दिन जब सीए एंट्रेंस क्लियर हो गया, ऐसा लगा कि यार सीए ऑलमोस्ट बन गए. And now the animal that was staring in my face, although it was 3 years away, was the CA final exam. But I didn't know that the worst was yet to come. अपने स्कूल में 3 टाइप के लोग होते हैं. एक होते हैं आपके फर्स्ट बेंचर्स, जो स्कॉलर्स आसान भाषा में, who are always asking questions in the class. Their parents are happy with them. The teachers are very happy with them. The second category of students are the last benchers. They're not interested in studies, but at least maja masti karke they're having the time of their lives. And then is this third category of people, middle benchers, जो ना तो पढ़ाई कर पाते हैं और ना मजा मस्ती कर पाते हैं. करने की दोनों कोशिश करते हैं, हो कुछ नहीं पाता. So I am that third category person. My name is Mudit Yadav. I cleared the CA and CFA exams in the first attempt. I was working with a Big Four firm as a consultant, and from the past many years, I've been a speaker, coach, and author on the topics of influence, motivation, and leadership. And I distinctly remember when I was growing up, sitting on the 4th bench in my classrooms, I very well knew that I was an average student. अब इस बात की मुझे बहुत accurate information इसलिए थी because my own younger brother was able to solve my maths problems, and I wasn't able to solve his maths problems, although I had just cleared the same class. And I remember when I was growing up, science नहीं कर पाएंगे ये तो काफ़ी clear हो गया था. So commerce decide कर ली थी. And the other reason why I wanted to take up commerce was because my father is a chartered accountant. And I remember हम लोग जब parties में जाते थे, कुछ करते थे, तो जब पापा अपने आप को introduce करते थे, like, hi, I'm Pankaj Yadav, I'm a chartered accountant. तो लोगों के ना ऐसे रिस्पेक्ट बढ़ जाती थी उनकी आंखों में, और मुझे देख के लगता था पता नहीं यार ये क्या करता है, मुझे भी यही करना है. तो सीए बनने की ड्रीम थी. यार बात एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी इज दैट स्टडीज में मैं एवरेज था, लेकिन एक सब्जेक्ट में मैं टेरेबल था. इफ यू नॉट गेस दैट ऑलरेडी, दैट सब्जेक्ट वाज मैथ्स. मुझे अभी भी याद है 8th स्टैंडर्ड में एक मैथ एग्जाम जस्ट हुआ था. टीचर ने मुझे बुलाया पेपर चेक करके और मैंने पेपर अपना हाथ में लिया. ऐसा लग रहा था किसी ने पेपर पे रेड पेन से x and 0 खेल रखा है. एंड आई एम लुकिंग एट दैट पेपर एंड द टीचर इज लुकिंग एट मी एंड शी आस्क्ड मी, Mudit, what do you want to be when you grow up? Suddenly when she asked me that question, I remember being very excited. I look at her and I say, ma'am, I want to be a chartered accountant just like my father. The lines on her face deepened as she said, you will never be a chartered accountant. Now take this paper and go back to your desk. That was a very difficult statement to hear for me because वो time school में whatever teachers say was like word of God for us. And I had this blind passion to become a chartered accountant. Maybe I didn't understand what they did, but just because my father was a chartered accountant, and I wanted to become just more like my father. And what I was unable to understand is how does a little exam help my teacher determine what I can and cannot do for the rest of my life. Anyway, I enrolled for CPT, that was the CA entrance back then. And वो enroll होकर अभी realize हुआ कि यार CA में फिर से मैथ्स आ गई कैसे. तो बोला अभी इससे ज़्यादा दिन भाग नहीं सकते मैथ्स से, कुछ तो इसमें करना पड़ेगा. एंड सो उसमें ऐसा 12th and 12th के इमीडिएटली बाद आपका CPT CA एंट्रेंस एग्जाम हो जाता था. तो ये 11th और 12th में यार बाकी सब्जेक्ट्स बाजू में रख के मैंने खाली मैथ्स पे पूरा का पूरा फोकस किया. और जब 12th स्टैंडर्ड का बोर्ड का रिजल्ट आया तो मैथ्स में आई स्कोर्ड 96 आउट ऑफ 100 मार्क्स. मतलब 96 मार्क्स तो मेरे आज तक किसी चीज में कभी नहीं आए थे. एंड ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स आई गॉट इट इन मैथ्स. एंड आई थिंक माई लर्निंग ऑन दोस 2 years वर कि जब मैं मैथ्स को सीखता था मैं क्लासरूम में सीखता था, प्रैक्टिस करता था वो घर पे करता था, और एग्जाम देता था एग्जाम हॉल में. तो एग्जाम का जो स्ट्रेस आ जाता है ना एकदम से, उसमें जो चीज़ें याद भी होती है वो नहीं याद रहता. आई वाज लाइक हाउ कैन आई टर्न दैट अराउंड. सो द लेसन फॉर मी देयर वाज कि द मोर मॉक एग्जाम्स आई डू एट होम,
it helps me get better at mathematics. और फिर सी एंट्रेंस एग्जाम हुआ, सी एंट्रेंस का रिजल्ट आता है, CPT as it was called back then. You need 100 out of 200 marks to pass. I check my result. I have scored 159. And that is well beyond passing marks. And I can't believe it myself. And याद है मुझे यार वो दिन जब C एंट्रेंस क्लियर हो गया, ऐसा लगा कि यार C ऑलमोस्ट बन गए. मतलब अभी तो हो ही गया ऑलमोस्ट, जो सारी इंपॉर्टेंट चीज होनी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी CA बनने में. But I didn't know that the worst was yet to come. And so, जो next level अपना होता है, right now it is called IPCC. And I remember enrolling for a classes. I'm trying to figure out what's going on in the classroom. Because if CPT was a small bowl of water, IPCC now seemed like an ocean out there. So I remember one of these lectures, I was sitting there, I think the professor was teaching something like amalgamation of companies. And he was on question number 7. He was running ahead, racing ahead. I was trying to catch up. And I'm looking at my friend's notebook on the previous sums. I'm trying to copy them because the class is moving so fast. It is way, way too heavy for me to catch up. And I'm trying to copy when suddenly there is pin drop silence in the class. And जब pin drop silence हो जाता है, सब लोग प्रोफेसर की तरफ देखे, मैं भी प्रोफेसर की तरफ देखा, only to realize the professor भी मेरी तरफ देख रहे हैं. And says the words that still give me goosebumps as I think about that moment. He says कि तुम्हारे बाप को भी लगता होगा कि तुम bad dads हो. And the reason what he said hurt so much was because partially I knew that he was right. I still remembered I could not get into the college that my father wanted me to get into. And now I'm here. Somehow I've passed CA entrance, but it does not look like I will ever be able to catch up with this curriculum that's going on the second level of the CA exam. And I remember those few days I was so sad that it was hard for me to maintain eye contact with people. It was hard for me to talk to my own parents. I almost lost a few kilos of weight. I think I needed that. But it was so difficult for me in those days because I kept thinking, I was so sad कि यार, what am I doing with my life if I'm not able to at least give back a little bit to my parents as compared to what they gave me. And then I thought, you know what, I'm a bad dads, right? Maybe he's right. Maybe I am bad dads. And what we learned in 11th standard about bad dads, if there are bad dads, then one should make provision for those bad dads. And so if I am a bad dad, I am bad at my studies, then I got to understand that if people wake up at 6 a.m., I have to wake up at 4 a.m. If people can sleep at 10 p.m., I got to sleep at 12 a.m. If people can watch one movie a month, I can watch one movie in 3 months. If people have to start studying 6 months in advance, I have to study 8 months in advance. If people can do with one revision, I have to do 3 revisions. I was making a provision for my bad dads. And I remember the IPCC results came. I managed to pass that exam. That was the greatest academic achievement of my life back then, and I did not feel the anger or sadness to go and tell that professor. In fact, I felt a sense of gratitude because what he said fueled what I did towards my goal. And now the animal that was staring in my face, although it was 3 years away, was the CA final exam. And I remember students typically start studying 6, 8, 10, 12 months in advance, but I started studying 18 months in advance. Why? Because I'm a bad debt and I have to make a what? I have to make a provision for that bad debt. तो भाई वो 6 महीने एक्सेस पढ़ूंगा, मेरा प्रोविजन है. और एक और रीजन था पहले जल्दी पढ़ने का, इज दिस सब्जेक्ट कॉल्ड कॉस्टिंग. यार जितने सम करो हर बार कोई नया ही सम आ जाता है. एंड आई हेटेड दैट सब्जेक्ट. आई थिंक मे बी बिकॉज थोड़ा मैथ्स का ही कजिन लगता है मुझे, डिस्टेंट कजिन कॉस्टिंग. एनीवे, सो 18 months to go for the CA final exam. And my most focus in the 12 months, first 12 months is on, first 12 to 13 months is on costing. And my first 12-13 months maximum time costing को देता हूँ और फिर मैं अपना पहला मॉक एग्जाम लेता हूँ. मेरा मार्क्स आया कॉस्टिंग में 8 on 100. एंड 8 मार्क्स देख के मैं पेपर पलट रहा हूँ. आई एम थिंकिंग कि यार ये जीरो तो नहीं डालना भूल गए. बट ये जीरो डालना नहीं भूले, ये तो मेरे ही मार्क्स हैं. एंड देन आई स्टार्ट थिंकिंग कि यार अभी 1 साल ये एक सब्जेक्ट पढ़ा नहीं हुआ तो ये तो मेरा यही सीन हो जाएगा, अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट, क्योंकि अभी 5-6 महीने बाकी हैं और उसमें इतने सारे सब्जेक्ट कवर करने. हाउ इज इट पॉसिबल? बट देन अ डिफरेंट थॉट स्ट्रक मी, एंड दैट थॉट वाज that these marks, this 8 or 100, is actually my future. If I hadn't given this mock exam, this could well be my final score. And so if I can see the future, I can change the future. And so I go back home, I tell myself I've been studying a lot, but now I have to take it a few notches higher.
And then the next 5 months that I studied, I remember 14 or 16 hours a day. I'm not saying everybody needs to study 14 or 16 hours a day. I had to study because, again, I was a bad debts and I had to make provision for those bad debts. So those 5 months, I was doing only 4 things. I was eating, sleeping, studying, and shitting 14 hours a day. That's all. And I distinctly remember that morning in the July of 2015 when the CA final results were due to come out. The screen froze for a few seconds and bam, my result appeared on screen. I scrolled through the marks just to see those 4 letters that flashed on the screen in that moment. PASS. Pass. I remember my parents' faces that day, the expression that they had of pride, of happiness. I have never seen those expressions on their faces either before or I've never seen it ever again. And I could do this whole thing again just to see that one expression on their faces. It was all worth it. And after my chartered accountancy, I wanted to get into finance or strategy. And so I appeared for the CFA exams. And as I was clearing those exams, I was working as a consultant in a Big Four firm. There's still a long way to go in my life. The 3 lessons that have served me so far and that I invite you to apply in your life are, number 1, compromise is a dangerous cycle. You see, you set a goal for yourself and उस गोल को पाने के लिए जो एफर्ट्स चाहिए होते हैं वो एफर्ट्स में कॉम्प्रोमाइज करते हैं एंड सो यू आर नॉट एबल टू गेट टू दैट गोल एंड व्हेन यू नॉट एबल टू गेट टू दैट गोल यू कॉम्प्रोमाइज ऑन द गोल and then you compromise on the effort. You're not able to get to that goal and then you compromise on the goal. तो अगर आप वो अपनी कॉम्प्रोमाइज की साइकिल ब्रेक कर देंगे अपने एफर्ट्स को बढ़ा के, तो आपके गोल्स भी ऊपर जाते जाएंगे और उसके लिए जो आपके एफर्ट्स रिक्वायर्ड है वो अपने आप उसके पीछे पड़ते जाएंगे. द सेकंड लेसन इज दैट एफर्ट्स आर रेगुलर, रिजल्ट्स आर इरेगुलर. यू सी व्हाट हैपेंस विद अस इज कि हम लोग थोड़ा एफर्ट करते हैं तो हमें उस थोड़े एफर्ट के लिए थोड़ा रिजल्ट चाहिए होता है एंड हर एफर्ट के लिए हमें हर थोड़ा थोड़ा रिजल्ट चाहिए होता है. लेकिन ऐसा लाइफ में होता नहीं है. लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है कि आपको लगातार रेगुलरली एफर्ट देते जाना होता है और उसका जो रिजल्ट आएगा एकदम से इरेगुलरली आएगा, एकदम से आएगा. फॉर एग्जाम्पल मैथ्स में फॉर मेनी ईयर्स आई केप्ट प्रैक्टिसिंग मैथ्स. कभी कभार मार्क्स कम भी हो गए बट देन सडनली दैट रिजल्ट कम्स आउट एंड दैट इज व्हेन इट इज वर्थ ऑल ऑफ दैट एफर्ट. तो थोड़े एफर्ट के साथ थोड़ा रिजल्ट मत देखिए. एनी एफर्ट दैट यू आर मेकिंग अगर आपको रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा है, रिमेंबर दैट एफर्ट्स आर रेगुलर, रिजल्ट्स आर इरेगुलर. एंड द फाइनल थिंग इज कि आप ये मत एक्सपेक्ट करें कि अगर आपका कोई ड्रीम है, आपका कोई गोल है, आपके आजू बाजू लोग आपको सपोर्ट करने वाले हैं. वो ऐसा नहीं होने वाला है. मैक्सिमम लोग आपके आजू बाजू वाले होंगे जो आपका मजाक बनाएंगे, बोलेंगे कि यार कोई चीज़ नहीं हो सकती. इट इज़ फॉर यू टू डिसाइड इज वेदर यू लेट नेगेटिव पीपल fire your dreams or fire up your dreams. It is a choice and you make that choice. Thank you for listening to my story.